Hello and welcome to the class. So today we are going to discuss one more life process, that is respiration. आज हम respiration के बारे में पढ़ने वाले हैं. Definitely this topic is not going to complete in one class. एक ही class में ये सारा topic खत्म नहीं होगा. We are going to take 4 to 5 classes to complete this topic. Yeah. So come on. We'll start with respiration, students. What is respiration? What are the different types of respiration? ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं. So you all must be knowing that all living cells, yes, they require energy for various activities to perform. Yeah, this energy is made available to the cell by breakdown of food. Yeah, that is glucose. Yeah, by breaking down of food, we get the energy, and from this energy, the cell is performing its different activities. So, in short, I can say that food acts as a fuel for energy. Yes, can we write like that? That food acts as a fuel for energy. हम लिख सकते हैं कि food, it acts as a fuel for our body. Yes, because it is giving you the energy. वो आपकी energy supply कर रहा है. So this process of obtaining energy, yes, by the food, this is respiration. हम अभी तक क्या पढ़ते थे, respiration बोला, so that is we are going to take the oxygen in and giving out carbon dioxide. No students, this is not a simple, इतना simple नहीं है. You are not wrong that oxygen अंदर ले रहे, carbon dioxide बाहर दे रहे, but क्यों, why this is happening? So we are going to discuss all this in detail. Yeah, so I can say that respiration is a process by which the assimilated food is oxidized in presence of specific enzymes. Here the role of enzyme is also very important. Enzyme का role यहाँ पर भी बहुत important है. We have already discussed the role of enzyme in the digestive system, है ना. जब हम digestive system पढ़े थे तो तब हमने देखा था कि how the enzymes are important, how they are useful for the digestion. Here also this respiration is performed in presence of specific enzymes, and then the energy is released. Okay, so respiration क्या बोलेंगे in a simple way? Also I can say that it is a chemical process, yes, of releasing energy. How? By breaking down glucose or food for performing various activities in a सेल और अ बॉडी, है ना. इसी को हम बोलेंगे रेस्पिरेशन. ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है. रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें गैसियस एक्सचेंज होता है, यस, बिटवीन द बॉडी एंड द आउटसाइड एनवायरनमेंट. अंदर और बाहर के बीच में क्या हो रहा है? देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ गैसेस. एंड यस, रिमेंबर दिस इज इंपॉर्टेंट दैट इट इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस. Got it. So I can say that in respiration क्या हो रहा है? Food ऑक्सीजन के साथ मिलके, ऑक्सीजन जो हम अंदर लेते हैं, यस, वो ऑक्सीजन फूड के साथ मिलके क्या हो रहा है? इट्स फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड. यस, इस तरह से एनर्जी मिलती है. ये होता है आपका रेस्पिरेशन में. इन द सिंपल वे वी कैन ऑल्सो राइट हियर फूड, जो कि हम मैंने बताया आपको, इट इज इन अ फॉर्म ऑफ अ ग्लूकोज. यस, दैट इज अ कार्बोहाइड्रेट. तो C6H12O6 ऐसा लिख सकते हैं. कैन वी राइट लाइक दैट? ऑक्सीजन, आई कैन राइट 6 molecules, 6O2. इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन. ये प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन. यस, एंड इट गिव्स यू 6 CO2, yes, carbon dioxide, 6 molecules of water, और एनर्जी रिलीज हो रही है. और एनर्जी रिलीज हो रही है इन अ फॉर्म ऑफ, आप सबको पता होगा, ATP. वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग, मैं बताती हूँ. बट इन दिस वे जस्ट रिमेंबर दैट व्हाट इज ऑक्सीजन डूइंग. यस, इट इज देयर फॉर एन food is oxidized, I can say, got it, into carbon dioxide, water, as well as energy is released. Now you all must be knowing what is catabolic process. जहां तक सभी को पता होगा कि catabolic process क्या है. Yes, यदि नहीं पता तो we will just very fast I will tell you. If I say that it is a catabolic, yes, what is this catabolic? Catabolic, or we can in a different simple way we can say process where which gives energy.
जहां पर एनर्जी रिलीज होती है, जो एनर्जी देता है. Yes, or you can also write here that it is a destructive or breaking down process. Yes, ये एक प्रोसेस कैसा है, डिस्ट्रक्टिव, तोड़ रहा है. Yes, और ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस, आप उसको इस तरह से याद रख सकते. कैटाबॉलिक, तोड़ना. Yes, तोड़ के what is it giving? It is giving you energy. It is releasing energy. Yeah. So the catabolic, that means it is a metabolic process by which what happens? Large molecules, they are broken down into simpler molecules. बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके सिंपल मॉलिक्यूल्स में फॉर्म किया जाता है, और वे प्रोसेस में जो एनर्जी होती है वो रिलीज होती है. इट इज गिवन आउट. Yes, so we get the energy. Got it? One more term is there, if you remember, जैसा catabolic है वैसे एक और term होता है जिसको हम बोलते हैं anabolic. Yes, anabolic process is also there. Anabolic is nothing but जैसे यहाँ पर energy is released. Here this will require energy. Yes, what is it doing? It requires energy. Just remember. ये प्रोसेस में एनर्जी लगती है. दैट मीन्स इट इज अ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस और बायोसिंथेटिक प्रोसेस. यू कैन राइट हियर कंस्ट्रक्टिव और बायोसिंथेटिक. Yes, it is constructive or biosynthetic process where we can say the complex cellular compounds, yes, they are synthesized from simpler compounds. यहाँ पर हमने क्या बोला था? What did I say? That the large molecules or the complex one, they are broken into simple. Yes, here यहाँ पर हम बोलेंगे कि जो simple molecules से simple compounds थे उसमें से large complex compounds synthesized हो गए, बनेंगे. Yes, तो कुछ चीज बनाना है तो एनर्जी लगेगी. We require energy. Yes, so energy is required here. I hope this two terms is very much understood by you. Yes, because it is important. आपको पता रहना चाहिए कौन सा प्रोसेस कैटाबॉलिक है, कौन सा एनाबॉलिक है, हम क्यों कैटाबॉलिक बोल रहे हैं, हम क्यों एनाबॉलिक बोल रहे हैं. I hope this is very much clear to all of you. Yeah, so respiration एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है. या इसीलिए हम बोलते हैं कि हमको यहाँ पर एनर्जी, वी आर गेटिंग द एनर्जी दे. Isn't it? So there is a question here. यहाँ पर एक क्वेश्चन हमेशा आता है दिमाग में कि इफ इट इज अ रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस, तो इसी की तरह एक और प्रोसेस होता है प्लांट में जिसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स फोटोसिंथेसिस. So can I say that respiration and photosynthesis are same? दोनों same है क्या? What do you think? Or they are similar? Is it like that? Actually, students, it is not same or similar, but respiration is opposite of photosynthesis. बिल्कुल opposite है. Yes, respiration of photosynthesis से opposite है. How? Yes, there could be a question कि ma'am, how you are saying that it is opposite? Definitely, I can say that, look students, respiration अभी हमने देखा कि it is a catabolic process. Yes, where energy is released there. Yeah, where what we are doing, the large molecules are broken into simpler one. Whereas photosynthesis is an anabolic process. फोटोसिंथेसिस में हम क्या देखते हैं? फोटोसिंथेसिस में हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलके क्या बना रहा है? कार्बोहाइड्रेट. So smaller simpler molecules से हम we are synthesizing what? We are synthesizing the complex one, that is a carbohydrate. Yes, in the respiration what we are doing? We are breaking this carbohydrate into simpler form. So respiration एक catabolic process है जबकि photosynthesis एक anabolic process है. और क्या difference है दोनों में इसके अलावा? Is there any other difference? Yes, you can see there. What happens in photosynthesis? The glucose that is formed. Yes, कैसे form होता है? By using carbon dioxide, water
and energy. Look students, energy is used here. यहाँ पर energy use की गई है ना. Also in it oxygen is released. यहाँ पर oxygen release है. Photosynthesis releases the oxygen because oxygen is obtained as a byproduct. हमने पढ़ा ये, जब हमने photosynthesis पढ़ा in detail, we have discussed all this thing. Yes, if you have missed students, you can see the recorded lectures. It is already there. You can see the lectures on the photosynthesis as well as digestion. We have already discussed all these things. Now, whereas in respiration, what happens? The food is broken down by using what? Here we are using oxygen. And what is released? Carbon dioxide, water and energy is released. Look, this is a very big difference there. यहाँ पर energy is used up in photosynthesis. Oxygen is released. In respiration, oxygen is used up, energy is released. With energy, what the other thing is released? Carbon dioxide or water भी released हो रहा है. Yes, so ये इसीलिए हम इसको कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक प्रोसेस बोलेंगे, और इसीलिए हम बोलेंगे कि it is just opposite. Both the processes are opposite to each other. Yeah. One more difference, you can say that photosynthesis कहाँ होता है? We know that photosynthesis takes place in chloroplast, है ना? In the mesophyll cells, in the thylakoid, we all know this. In the chloroplast, the thylakoid is there, and there this chlorophyll is present also. So photosynthesis takes place in chloroplast, isn't it? Whereas respiration कहाँ होता है? Respiration takes place in all the cells, जितने भी living cells है, because all the cells will respire. Yes, they need energy. So respiration takes place in all the living cells. Remember this thing. Now, also one more difference you should remember. Photosynthesis में जो light energy है, the energy that we get from the sun, isn't it? So light energy is converted into chemical energy. Yes, और बाद में उसको store किया जाता है. Whereas respiration में क्या होता है? Chemical energy, it is partly converted into heat as well as energy. Yes, जो heat released होगी, है ना, heat में से फिर energy obtained होती है. Got it? This is done in a respiration. Photosynthesis, I can say, result in gain in weight, whereas respiration result in loss in weight. क्योंकि respiration में क्या हो रहा है? Yes, loss in weight, we can say energy is released there. Photosynthesis, it takes up the energy. Yes, so remember, photosynthesis results in the gain in weight, whereas respiration result in loss in weight. So I hope, यदि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि whether the photosynthesis and respiration are similar, so your answer should be no, they are opposite. Why they are opposite? I have given you the explanation. हमने उसको explain कर दिया क्यों वो opposite होते हैं, isn't it? Now, the next thing हम बार बार बोल रहे हैं कि we are getting energy there. In respiration we get energy, and this energy that we get in respiration, students, it is in a form of what? ATP. Yes, so what is this ATP? ATP क्या होता है वो भी हम देखेंगे. Just इसके पहले I am just giving you the equation how we can relate this photosynthesis and respiration together. Yeah, if I talk about the photosynthesis, हम क्या देखते हैं? 6 CO2, am I right? Plus 6 water molecule in presence of, I will say, sunlight. Yes, and chlorophyll. What we get? We get C6H12O6 plus 6O2. Am I right? ये है आपका photosynthesis का equation that we have already seen. Now, respiration में क्या होता है? ये जो glucose बन रहा है, yes, ये used up होता है. Yeah, so I can write here in respiration what happens? 6C6H12O6 plus this 6O2. Yes, it is oxidized. Yes, it is oxidized to give you what? Give you carbon dioxide. I can say 6 molecules of carbon dioxide, 6 molecules of water,
एंड एनर्जी इन अ फॉर्म ऑफ एटीपी, और एटीपी के फॉर्म में हमको एनर्जी मिलेगी। तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ रेस्पिरेशन। अब समझ में आया कैसे ये दोनों डिफरेंट है ना? इसी का जो प्रोडक्ट है हम इसको यूज कर रहे हैं और नया प्रोडक्ट बनेगा। Got it? So now if I am talking about this energy और ATP, so ये ATP क्या है? ATP का फुल फॉर्म है स्टूडेंट्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राई मीन्स थ्री, तो इट इज हैविंग थ्री फॉस्फेट ग्रुप, तीन फॉस्फेट ग्रुप रहेगा ये मॉलिक्यूल में। यस, ATP इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। इसको हम एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी बोलते हैं। Yes, ATP is also called as energy currency of a cell. So this energy that is liberated during respiration, respiration के समय में जो energy liberate होती है वो सारी, हम ये नहीं बोलेंगे कि it is not in a form of heat completely. Energy हमेशा जो भी release होगी वो in a form of heat होगी, but ये पूरा ऐसा heat नहीं रहता है. It is converted. Large part of that heat is converted and it is stored. Yes, and this is stored in a form of ATP. Yes, जो हीट रिलीज होगी ना इसको हम स्टोर करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ एटीपी, जो कि एज अ एनर्जी यूज्ड होती है बॉडी सेल्स के। सो इट इज अ केमिकल सब्सटेंस एज आई टोल्ड यू, जिसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके पास हाई एनर्जी कंटेंट होता है। क्यों हाई एनर्जी कंटेंट होता है? बिकॉज ऑफ दिस ट्राइफॉस्फेट, दैट इज थ्री फॉस्फेट ग्रुप। Yes, phosphate group, it gives you the energy. It is, yes, so तीन phosphate group है, इसीलिए we can say that it is having a high energy content. Clear students? तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है रेस्पिरेशन के फॉर्म टाइम पे वो स्टोर हो रही है कौन से फॉर्म में? वो स्टोर हो रही है एटीपी के फॉर्म में। और जब भी whenever the cell requires the energy, it takes the energy from this ATP. Clear? Yeah. So now how this ATP is formed? जो एनर्जी रिलीज हो रही है रेस्पिरेशन की, रेस्पिरेशन के समय में, yes, it is taken up by the molecule of what? ADP. ADP, that is adenosine diphosphate and an inorganic phosphate to form ATP. तो क्या हो जाता है? ADP जो मॉलिक्यूल होता है, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है, yes, a phosphate, or we can also write inorganic phosphate there. Yes, and the energy that is released during respiration, ये सब मिलके क्या बन रहा है? It forms ATP. Yes, it forms ATP. Now when the energy is needed by the cell, ये ATP जो है ATP break हो जाएगी. Yes, the ATP is broken down into ADP and inorganic phosphate. ठीक है, जिससे जैसे बनी थी वैसे ही ब्रेक हो जाएगी और एनर्जी रिलीज हो जाएगी। यस, सो दिस इज रिलीज्ड। आई होप दिस इज क्लियर। गॉट इट? सो द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 30.5 किलो जूल्स पर मोल इज रिलीज्ड। एक एटीपी ब्रेक होने से, यानी एक फॉस्फेट रिमूव होने से 30.5 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। It is having three phosphate groups with that. Am I right? Yeah. So you can say, you can think about it. आप सोच सकते हो कि किस तरह से ये ATP सेल्स को हेल्प करती है टू प्रोवाइड द एनर्जी। अब ये एनर्जी कहाँ यूज होगी? द एनर्जी कैन बी यूज इन द डिफरेंट एक्टिविटीज, वेरियस एक्टिविटीज विच इज परफॉर्म बाय द सेल्स, जैसे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स है, एंजाइम्स बनाना है, प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स है, प्रोटीन सिंथेसिस है, यस, कंडक्शन प्रोसेस of the nerve impulses, or so many different processes which requires energy. They will take the energy from this ATP. I hope this is clear here. So I can say that ATP is called as what? It is called as energy currency of a cell. Got it, students? So this was about the ATP. Now the next thing is the need for energy. आप सबको पता होना चाहिए कि
एनिमल्स भी रेस्पिरेशन करते हैं, प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं। तो दोनों में से एनर्जी की नीड किसको ज्यादा है, प्लांट्स में ज्यादा है कि एनिमल्स में ज्यादा है? यस, सो द नीड फॉर एनर्जी स्टूडेंट्स ग्रेटर इन एनिमल्स एज कंपेयर टू प्लांट्स। व्हाई? क्यों ज्यादा है एनर्जी, नीड फॉर एनर्जी इन एनिमल्स एज कंपेयर टू प्लांट्स? एनीवन? Yes, because what the animals are doing, animals are the moving organism, isn't it? They have to move from one place to another. They do a lot of activities, whereas the plants, it is a living, but it is present in one place only. So the animals have to do a lot of physical work, whereas the plants don't have to do all this physical work like moving, running. ये सब नहीं करना है plants को, है ना? इसीलिए एनर्जी किसको ज्यादा लगेगी एज कंपेयर टू प्लांट्स? डेफिनेटली द एनिमल्स विल नीड अ ग्रेटर एनर्जी देन द प्लांट्स. नाउ इन बिटवीन द एनिमल्स ऑल्सो, यस, एनिमल्स में भी हम यदि देखेंगे तो मैमल्स और बर्ड्स को एनर्जी ज्यादा लगती है एज कंपेयर टू द अदर एनिमल्स. Listen carefully. If I compare with plants and animals, animals को एनर्जी ज्यादा लग रही है. If I compare between all the animals, तो सारे एनिमल्स में से हम बोल सकते हैं कि मैमल्स और बर्ड्स को एनर्जी ज्यादा लगती है एज कंपेयर टू सम अदर एनिमल्स. व्हाई अगेन? बिकॉज स्टूडेंट्स, मैमल्स क्या करता है, हमको हमारी बॉडी को वार्म रखना है. यस, वी वांट टू कीप आवर बॉडी वार्म, सो we have to produce a lot of heat. हमको हमारी बॉडी को अंदर से वार्म रखने के लिए हीट प्रोड्यूस करनी पड़ेगी. बाहर बहुत ठंडी है बट हमारी बॉडी के अंदर वार्मथ रहती है. हाउ द वार्मथ इज देयर? बिकॉज वी आर प्रोड्यूसिंग हीट देयर. यस, ये कहाँ से आएगा? दिस विल बी डन बाय, yes, through the respiration only. This heat comes, it comes from the respiration only. So, and also if you remember, when there is a too much of cold, बहुत जब ठंडी रहती है, so we shiver many times. Yes, we shiver, our teeth chatters or clatter, we can say. So the shivering and clattering of the teeth performed by the muscle cells, yes, this helps to produce the extra heat. Very sorry. Yeah, so that means when we are shivering or our teeth are clattering, yes, it is not in our hand ना. हम जानबूझ के तो नहीं करते. हम हमारे कप कप ही हमारी बॉडी में अपने आप होती है जब बहुत ठंडी लगती है, या फिर दांत हमारे एकदम क्लैटर करने लगते हैं जब बहुत ठंडी होती है. वो क्यों होती है? क्योंकि हमारे मसल सेल्स वो करवाते हैं ताकि हम, यस, ये चीज करने से एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस कर सके. So I hope this is clear that the mammals and the birds needs more energy as among the other animals. Yes. Now coming to again the point for the respiration, जैसे कि हमने कहा, हम बहुत बार बोलते हैं कि breathing. Yes, breathing is what? Taking in of oxygen and giving out the carbon dioxide. That is inhalation and exhalation. So that is the respiration only. वही respiration है. So can I say that breathing and respiration are also same? Yes. So what is breathing and how it is, if it is different from respiration, then how it is different from respiration? Actually, students, breathing is definitely the process of taking the oxygen rich air from the environment, yes, inside the body, and releasing carbon dioxide rich air into the environment after the oxidation of food. यस, यानी जब हम ऑक्सीजन रिच एयर अंदर लेते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन फूड के साथ मिलके क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड. एम आई राइट? वाटर और एनर्जी रिलीज कर रहा है. और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर अब बाहर निकल जाएगी. तो ये प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रीदिंग. तो क्या ये रेस्पिरेशन ही है? नहीं, ये रेस्पिरेशन ही नहीं है, बट यस, इट इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन.
सिर्फ ये प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन नहीं बोलेंगे. वी विल नॉट से दैट ओनली that process of taking in oxygen and giving out carbon dioxide is respiration. No, that is breathing. Just listen carefully and note it down. ये प्रोसेस को हम ब्रीदिंग बोलेंगे, ये प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन नहीं बोलेंगे. ब्रीदिंग इज डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. Yes, it is a part of respiration. I hope this is very much clear to all of you. Yeah, so you can see some difference between the breathing and respiration. Breathing एक physical phenomenon है जिसमें ऑक्सीजन अंदर लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड it is given out. Whereas respiration, it is not a physical phenomena, it is a biochemical process, students. Yes, where the glucose is oxidized to produce carbon dioxide and water. So this is a very important difference between breathing and respiration. Breathing, there is no energy which is released. We are just taking in oxygen rich air and giving out carbon dioxide rich air. That means exchange कर रहा है gases का. Whereas in respiration, definitely energy is released. Isn't it? Breathing is extracellular. ये सेल के बाहर होता है. किसके बीच में होता है? हम बोल सकते हैं आउटसाइड द एनवायरनमेंट और लंग्स के बीच में होगा, है ना. लेकिन रेस्पिरेशन इट इज विद इन द सेल. हर सेल रेस्पायर करता है. रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल, सो इट इज इंट्रासेल्युलर. ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स लंग्स, whereas respiration involves mitochondria, powerhouse of the cell. Yes, so the respiration involves mitochondria in the cell, students. In breathing, no enzyme is involved, whereas in respiration, some respiratory enzymes are involved. So these are the important difference between the breathing and respiration. And I hope this is very much clear how the breathing and respirations are different. Yes, now coming to the point, what are the different stages of respiration or steps of respiration? क्या हम respiration को डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट स्टेप्स में, जैसे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन. सो व्हाट आर दिस, वी विल डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट आई विल टेक इट एज अ फर्स्ट step. We can make it as an external respiration. अब क्या है ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन दैट मीन्स इट इंक्लूड्स ब्रीदिंग. यस, ये इंक्लूड क्या कर रहा है? ये इंक्लूड करेगा ब्रीदिंग. एंड द सेकेंड थिंग, इट इंक्लूड्स द गैसियस एक्सचेंज. यस, ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज. Now what is breathing? Breathing क्या है? We have already discussed that the breathing is uptake of oxygen, rich air, and release of what? Release of carbon dioxide rich air. Am I right? ये है breathing. अब गैसियस एक्सचेंज की बात यदि मैं करती हूँ तो ये क्या है गैसियस एक्सचेंज? देखो, सिर्फ ऑक्सीजन अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना, यही तो एक्सचेंज नहीं हो रहा है. किसके बीच में एक्सचेंज होता है? दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. Yes, so the gaseous exchange, that means diffusion of oxygen from the lungs to the blood. I can write here the gaseous exchange includes, listen it carefully students, if you want you can write it down. Diffusion of oxygen, yes, from the lungs, from lungs to the blood. Yes, यानी lungs से ब्लड में डिफ्यूज हो रहा है जो ऑक्सीजन. एंड सिमिलरली एंड डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड टू लंग्स, है ना. ऑक्सीजन जो हम अंदर ले रहे हैं वो डिफ्यूज कहाँ होगा? अंदर लेने के बाद लंग्स से हमारे ब्लड के थ्रू डिफरेंट सेल्स में जाएगा. सिमिलरली सेल्स में से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड के थ्रू वापस लंग्स में आएगा. इसको हम बोलेंगे गैसियस एक्सचेंज. क्लियर स्टूडेंट्स?
ये कैसे ट्रांसफर होता है? यू ऑल मस्ट बी नोइंग दैट ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड और ऑक्सीजन इज कैरीड बाइंडिंग विद द हीमोग्लोबिन। ब्लड में जो आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन रहेगा, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है. Yes, and it forms when it combines with hemoglobin. We say that it is oxyhemoglobin, isn't it? Whereas students, जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है टिश्यूज में और द सेल्स में, it is again transported back to the lungs by the blood in the veins. वेन्स के थ्रू होता है. लेकिन ये कैसे आएगा? ये भी ब्लड में आएगा क्या? Yes, there are different 2-3 process we can say, but yes, it can also come in combining with hemoglobin there. If it is combining with hemoglobin, we call it as carbaminohemoglobin. क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे carbaminohemoglobin. Yes, और दूसरा तरीका होता है, it comes in a form of a bicarbonates. बाइकार्बोनेट्स जो कि डिजोल्व, दे आर डिजोल्व इन द प्लाज्मा. ये दो तरह से कार्बन डाइऑक्साइड वापस लंग्स में आता है वापस. Yes, one, it combines with the hemoglobin and become, or it we call it as a carbaminohemoglobin, and also it comes in a form of as a bicarbonates which is dissolved in plasma. जबकि जो ऑक्सीजन जाता है, ऑक्सीजन is transported by the hemoglobin as oxyhemoglobin. Clear? In plants, what happens? In plants, it takes place through stomata. ये जो exchange of gases होता है, ये होता है through stomata. Takes place through stomata. I hope this is clear. Yeah, so this is the first step, that is the external respiration. That means we have taken the oxygen rich air and the gaseous exchanges done there. Now what happens in the cell? जब ऑक्सीजन सेल के अंदर जा रहा है, ये तब क्या हो रहा, और उसके बाद में जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा तो सेल के अंदर क्या होता है? दैट वी कॉल इट एज व्हाट? वी कॉल इट एज इंटरनल रेस्पिरेशन. Yes, we will call it as internal respiration, या फिर हम इसको बोल सकते हैं what we also call it as a tissue respiration. Yes, internal respiration or tissue respiration. What happens in this case? The gaseous exchange between arterial blood and body cells. Blood से आर्टरी से सेल में जाना. लुक, लिसन इट वेरी नाइसली. लुक, समझ में आ रहा है? सबसे पहले मैंने बोला ब्रीथिंग हो रहा है, दैट मीन्स आवर ऑक्सीजन रिच एयर इज टेकन. नाउ द गैसियस एक्सचेंज इज डन, दैट मीन्स फ्रॉम द लंग्स द oxygen is carried via blood. Now the exchange of this oxygen from this arterial blood into the body cell, that is the internal respiration. वो है internal respiration. Clear? So the जो blood है arteries में जो रहता है, it enters arteries से capillaries में enter होगा और उसके बाद में oxygen is diffused. Just a minute. Yes, then when this oxygen from the arterial blood, it enters the capillaries. From the capillaries, it enters a cell. There the oxygen is diffused into the cell, students. है ना? और क्या होता है बाद में? कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रहा है सेल में, इट इज पिक्ड अप. वही कैपिलरीज कार्बन डाइऑक्साइड को पिक करेगी सेल से और उसको रिलीज कहाँ करेगी? उसको वेन्स में रिलीज करेगी. Are you getting it? Yes. So that is nothing but the internal respiration. So the gaseous exchange between the arterial blood and the body cells, and I can say between the body cells to the venous blood also, isn't it? Because the carbon dioxide is going out in that. And the third type I can say is a cellular respiration.
अब सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होता है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज इट टेक्स प्लेस इन अ सेल. सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है. Yes, so in mitochondria of the cell, energy is obtained. Yes, in mitochondria of cell, energy is obtained. How? By breakdown of food. है ना, ऑक्सीडेशन होगा. और ये जो एनर्जी ऑब्टेन्ड हो रही है, दिस एनर्जी इज ऑब्टेन्ड इन अ फॉर्म ऑफ एटीपी. इट विल बी देयर इन अ फॉर्म ऑफ एटीपी, isn't it? So this is what is called as cellular respiration. यहाँ तक समझ में आया? So we can make a flow chart. बहुत सिंपल वे से मैं आप लोगों को एक फ्लो चार्ट के थ्रू I can tell you. देखो, we can say that the oxygen from a environment, yes, it enters lungs. ठीक है, और ऑक्सीजन रिच एयर थ्रू द एयर ओनली. यस, इट एंटर्स द लंग्स. तो ये हो गया आपका पहला, क्या हम बोलते हैं इसको, इनहेलेशन. एम आई राइट? नाउ इन द लंग्स व्हाट हैपेंस? देयर वुड बी अ गैसियस एक्सचेंज. इनहेलेशन है ना, ये टाइप ऑफ हो गया, पार्ट हो गया आपका ब्रीदिंग का. अब गैसियस एक्सचेंज हो रहा है. गैसियस एक्सचेंज में क्या हो रहा है? ये ऑक्सीजन है, ये डिफ्यूज होगा from lungs to the blood. Yes, so this enters the lungs and then oxygen diffuses into the blood. Am I right? अब उसके बाद में क्या हो रहा है? उसके बाद में आपका इंटरनल रेस्पिरेशन आएगा. इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या आ रहा है? द ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड और द गैसियस एक्सचेंज between arterial blood and cell. ये क्या है? दिस इज योर इंटरनल रेस्पिरेशन, isn't it? After this, what happens, students? After this, when the oxygen will reach the cell, then in the cell, in mitochondria of cell, yes, energy obtained by breakdown of food, yes, with the help of oxygen. ये प्रोसेस को क्या बोलेंगे? दिस इज नथिंग बट योर सेल्यूलर रेस्पिरेशन. एम आई राइट? अब ये तो हो गया एक पार्ट. ठीक है, एनर्जी मिल गई. अब इसको वापस से हमको इसी को उल्टा करेंगे. सो जो एनर्जी बन गई उसके बाद में व्हाट वी गेट? कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो रिलीज्ड इन दिस, है ना. ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ व्हाट वी कैन से, फूड प्लस ऑक्सीजन, इट गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. So this carbon dioxide which is obtained, it will go out. Yes, so there will be exchange of carbon dioxide, yes, into the what? Veins from the cell. Am I right? तो फिर से हो गया ये इंटरनल रेस्पिरेशन. उसके बाद में, इसके बाद हम क्या लिखेंगे? ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया वो डिफ्यूज हो जाएगा. CO2 diffuses in blood and then in blood as well as in the plasma. Yes, blood plasma. और उसके बाद में it will enter the lung. I can write here CO2 enters lung and given out of body.
ये इसको हम बोलेंगे एक्सलेशन। Am I right? This is little bit, आप ये इस तरह से flow chart एक can, I don't have the space इसलिए I have written like that, but yes you can write this type of flow chart, you can make and you can make. So this is complete. What is it? It is the respiration which includes inhalation, gaseous exchange, internal respiration, cellular respiration. Again the back the same thing, and it ends with a breathing or exhalation of the breathing there. Yes, तो ये पूरा हो गया आपका steps of respiration. I hope now this is very much clear to all of you. Now the next is the types of respiration. Yes, respiration के भी types होते हैं. It is mainly, I can say that you can give it as an aerobic respiration. Yes, and anaerobic respiration. Yes, aerobic respiration we can also call it as oxybiotic. Yes, that means presence of oxygen takes place in presence of ऑक्सीजन. जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा उसको हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन. एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन आल्सो कॉल्ड एज एनऑक्सीबायोटिक. yes, एनऑक्सीबायोटिक. that means it takes place in absence of oxygen. Got it? In the aerobic respiration students, because it takes place वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, तो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होती है ना, large amount of energy is released. Large amount of energy is released. Yes, whereas in anaerobic respiration, very small amount of energy is released. Got it? Now aerobic respiration takes place in 3 steps. 3 steps में aerobic respiration होता है. पहला स्टेप है ग्लाइकोलिसिस. ये आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, बट ये हम शॉर्ट में इसको देखेंगे. ग्लाइकोलिसिस एंड लिंक रिएक्शन. उसके बाद में दूसरा स्टेप होता है टीसीए साइकिल या फिर साइट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं इसको. और तीसरा है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. yes, electron transport chain, or we also call it as etc. got it? जबकि aerobic respiration again we can make it in a 2 types. एक आता है आपका in absence of oxygen है ये, so it is a lactic acid formation. lactic acid बनाता है. एंड दूसरा होता है आपका ईस्ट फर्मेंटेशन. आपने फर्मेंटेशन पढ़ा होगा. यस, ईस्ट फर्मेंटेशन. सो ये होता है आपका एनारोबिक. So we will discuss both type of respiration. In today's class, we will just discuss the aerobic respiration. In the next class, we will discuss the anaerobic respiration. Okay. So हम जो aerobic respiration, that is respiration that takes place in presence of oxygen. Oxygen के presence में जो respiration होगा उसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन. जैसे कि मैंने आपको बताया कि इट इंक्लूड्स 3 स्टेप्स. पहला स्टेप है आपका ग्लाइकोलिसिस. यस, ग्लाइकोलिसिस इसको हम बोलते हैं जहां पर ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होगा. यस, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन. ये जो तीनों स्टेप मैं आपको बता रही हूँ, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेल्यूलर रेस्पिरेशन. लिसन इट. जो मैंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो हो रहा है, ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन की बात जो कर रहे थे. यस, सेल के अंदर ये सारी चीजें कहाँ हो रही है? हर एक सेल में होती है. इन ऑल लिविंग सेल. यस, so inside the cytoplasm of a cell, this first step of respiration or the first step of cellular respiration takes place, that is glycolysis. इसको हम EMP भी बोलते हैं, that is Emden Meyerhoff Parnas pathway. It is also called as EMP pathway, students. Okay. In glycolysis what happens? One molecule of glucose, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जो कि 6 कार्बन से बना होता है, C6. यस, हम ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या लिखते हैं? C6H12O6. दैट मीन्स इट इज मेड अप ऑफ 6 कार्बन. या so one molecule of glucose is broken down into 2 molecules of pyruvate.
एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल बनते हैं। पायरुवेट का एक मॉलिक्यूल 3 कार्बन से बनता है। हमारे पास 6 कार्बन है, तो 3 और 3 6, 3 और 3 ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे पायरुवेट के। सो ऑलवेज रिमेंबर, फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 2 molecules of pyruvate is obtained in the process of glycolysis, and this takes place in presence of different enzymes and coenzymes. 10 स्टेप्स की प्रोसेस होती है ग्लाइकोलिसिस की, जिसमें हर एक स्टेप में एंजाइम्स और कोएंजाइम्स यूज होते हैं। हमको ये सारा नहीं पढ़ना है, दिस विल बी डन इन द हायर क्लासेस। यस, तो यहाँ पर क्या होता है, स्टार्ट होता है आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, और वो ब्रेक होगा ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एंड यू विल गेट 2 molecules of pyruvate. Glycolysis कहाँ होता है? Glycolysis takes place in the cytoplasm of a cell. A very important point to be noted, students, आप लिख लो, you can note it down, that oxygen is not required in glycolysis. Yes, oxygen is not required in glycolysis. यानी ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी ग्लाइकोलिसिस होगा। यहाँ पर आपको ऑक्सीजन का कोई भी कंडीशन नहीं है, सिर्फ ग्लूकोज किस में ब्रोकन हो रहा है, इट इज ब्रोकन डाउन इनटू द 2 molecules ऑफ पायरुवेट। क्लियर स्टूडेंट्स? सो ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड देयर। नाउ पायरुवेट जो बन रहा है, जो लिंक रिएक्शन है, यस, ग्लाइकोलिसिस एंड लिंक रिएक्शन। सो ये जो पायरुवेट जो फॉर्म होगा, द पायरुवेट इज फर्दर converted into what? It is further converted into acetyl coenzyme A. Yes, 2 molecules of acetyl coenzyme A. Yes, in link reaction. ये जस्ट आप सिर्फ अभी ध्यान रखो, आपको ये डिटेल में नहीं पढ़ना है। You should know, that's why I'm telling you. तो ग्लाइकोलिसिस में क्या हो रहा है, ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट बन रहे हैं। अब पायरुवेट से एसिटिल कोएंजाइम ए का मॉलिक्यूल बनेंगे, और ये कब होगा, ये होता है लिंक रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स? सो ये हो गया अभी, क्योंकि ये जो एसिटिल को है ना, दिस विल बी रिक्वायर्ड, ये हमको आगे काम लगेगा, इसीलिए। नाउ द आफ्टर ग्लाइकोलिसिस द नेक्स्ट स्टेप इन द सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज क्रेब्स साइकिल। यस, या फिर हम इसको टीसीए साइकिल भी बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या फिर हम इसको साइट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये साइकिल में जब ये स्टेप्स होते हैं, उसका फर्स्ट प्रोडक्ट citric acid, because of the first product which is formed there, we called it as a citric acid cycle. Yes, Krebs cycle हम क्यों नाम दे रहे? क्योंकि it is named after Sir Hans Krebs. इन्होंने ये बताया था। ये सो इनके नाम के रिस्पेक्ट देते हुए हमने ये साइकिल का नाम दिया है क्रेब्स साइकिल। गॉट इट स्टूडेंट्स? So Krebs cycle is the second stage of cellular respiration, which is the first stage glycolysis and the link reaction. Krebs cycle, in this cycle there is step-by-step breakdown of this pyruvic acid to produce carbon dioxide and water with release of energy in presence of oxygen. Glycolysis, no oxygen was needed, but yes, in Krebs cycle this takes place only in presence of oxygen. Glycolysis cytoplasm of a cell में होता है। Krebs cycle आपका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होगा। Yes, it occurs in the matrix of mitochondria. Got it students? तो ये Krebs cycle में जो मैंने आपको बताया कि लिंक रिएक्शन में एसिटिल कोएंजाइम ए बनाता है ना, तो ये एसिटिल कोएंजाइम ए जो लिंक रिएक्शन में बनता है वो ऑक्सीडाइज्ड होता है, और उसमें से आपको कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होगी। आई होप दिस इज क्लियर। यस, तो आपको ये वाले टीसीए साइकिल में या क्रेब्स साइकिल में 4 molecules of carbon dioxide you get 2 molecules of ATP. yes, आपको मिलता है FADH2, और आपको इसके साथ साथ मिलता है NADH also. Got it? इसका क्या रोल है? Yeah, these are also, again we are going to get the energy from FADH or NADH. Just remember this you obtained. Yes, in a Krebs cycle. So the hydrogen ions that are released in the cycle, hydrogen ion भी released होते हैं cycle में,
वो हाइड्रोजन आयन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे और वाटर मॉलिक्यूल बनेगा. यस, सो ऑक्सीजन इज नीडेड. क्यों लग रहा है ऑक्सीजन? वाई वी नीड द इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन? इट इज रिटर्न, इट इज नीडेड टू रिमूव दिस hydrogen ion that are formed, because it will combine with this and it forms a water molecule. Got it, students? So this was the second stage of the cellular respiration. The third stage is your electron transport chain or ETC. आपका जो TCA साइकिल या क्रेब साइकिल में NADH और FADH2 बना था, यस, ATP के साथ में, ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू पास होता है. माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस रह गए, इसमें से ये पास होगा और बाद में फ्रॉम देयर यू गेट व्हाट? इट गिव्स यू द ATP. Yes, it gives you the ATP. Again, I am saying electron transport chain, oxidative phosphorylation, ये सारा एक बहुत डिटेल टॉपिक है, आपको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है. In higher class you will have to study, but just keep in the mind this is a third stage there. Okay, the hydrogen atom which is produced in the Krebs cycle, है ना, हाइड्रोजन एटम जो बना ये यहाँ पे ब्रोक होगा, किसमें? वो प्रोटॉन बन जाएगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स. This will combine with the oxygen and the water molecule is formed. Okay, thus from one molecule of glucose, जो एक मॉलिक्यूल हमने स्टार्ट किया था ग्लाइकोलाइसिस के समय में, वो एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से ATP फॉर्म होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में. कितनी ATP? 38 ATP. रिमेंबर, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हाउ मेनी ATPs आर फॉर्म्ड इन एन एरोबिक रेस्पिरेशन फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज. So one molecule of glucose, it gives you 38 ATP. Yes, and which is the site of our aerobic respiration? Remember, it is mitochondria. The question पूछा है, which is the site of aerobic respiration? It is mitochondria. Got it? But yes, उसको one by one step बोला तो glycolysis takes place in the cytoplasm, whereas the Krebs cycle that requires oxygen, it takes place in the mitochondrial matrix. Got it, students? Yeah, so we can say, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, that the food, yes, it undergoes the glycolysis. Glycolysis कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में होती है. From this food we first of all, food that means glucose, है ना, यहाँ पर हम ग्लूकोज भी लिख सकते हैं. We get pyruvate, यस, या फिर पायरुविक एसिड. अब ये पायरुवेट से क्या हो रहा है? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यस, क्रेब साइकिल में, क्रेब साइकिल में इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, yes, also I can write in presence of oxygen. This is important, है ना. What you get? You will get 6 molecules of carbon dioxide, 6 molecules of water, and energy is obtained in a form of 38 ATPs. Got it? So 38 ATPs are there, and yes, you can say, or आप बोल सकते हो कि इन सब में enzymes are also required. In a simple way, I can again write C6H12O6 plus 6O2 in presence of enzymes. There are different enzymes. You get 6CO2 plus 6H2O plus 38 ATPs. अब ये 38 ATPs के अलावा स्टूडेंट्स और थोड़ी सी हीट बचती है, हीट एनर्जी बचती है, दैट इज 420 किलो कैलोरी. दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन. दिस इज द हीट एनर्जी. यस, जो हीट एनर्जी बन रही है ना, उसमें से 38 ATPs तो ये बन गई आपकी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो बची हुई हीट एनर्जी रहेगी वो कितनी रहेगी? 420 किलो कैलोरीज. आई होप दिस इज क्लियर. या नाउ हाउ 38 ATPs? आप बोलोगे मैम 38 ATPs कैसे बन रहा है? तो चलो वन बाय वन आई जस्ट टेल यू. फास्ट आई विल से, जैसे पहला प्रोसेस था आपका ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइकोलाइसिस में व्हाट यू गेट 2 ATP. आपकी 2 ATPs मिलती है आपको, यस, और उसके साथ साथ आपको मिलता है 2 NADH. अब स्टूडेंट्स फ्रॉम 1 NADH वी कैन से दैट
3 ATPs are obtained, approximate. Yes, from 1 NADH, 3 ATPs. So 2 NADH हो गया तो I will write here 1 NADH gives 3 ATPs. So 2 NADH हुआ है ना, that means how much ATPs it will be there? 3 2s are 6 ATPs. तो टोटल कितनी हो गई? यहाँ पर हो गई आपकी 6 ATPs. यस, ये हो गया आपका 6 ATPs और ये हो गया आपका 2 ATP. 6 plus 2 total is 8 ATPs. So 8 ATPs you get from the glycolysis. Similarly in the TCA cycle or Krebs cycle आपको मिलता है 2 ATP या फिर GTP, दोनों एक ही है. यस, देन 6 NADH बनेगा और दो मॉलिक्यूल, दो आपका FADH2 बनेगा. तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ 2 ATP का 2 रहेगा, 6 NADH है, एक NADH 3 ATP दे रहा है, तो 6 कितने देगा? 18. Yes, so it will give 6 into 3, that is 18. Am I right? I am writing it directly. Okay, you will get confused or else. Just a minute. Yes, 18 हो गया. And 1 FADH, it gives how much? 2 ATPL, right? 1 FADH, 2, it gives 2 ATP. तो 2 FADH है तो टोटल हो गई आपकी 4. So how much is there? Total is 18 plus 4 plus 2. कितने हो गए? Yes, 18 plus 2 20 and this is 24 ATP. ये 24 ATP हो गया और ये आपका 8 ATP हो गया. It is 32. Yes, now the last is your ETC, electron transport chain में students, from 2 NADH. Yes, that means how much it is? You will get 3 2s are 6 ATPs. Yes, you get 6 ATPs. So how much is the total? 8 ATP plus 24 ATP plus 6 ATP. It gives you total 38 ATPs. इस तरह से 38 ATPs हम बोलेंगे in your aerobic respiration. So how much ATPs? 38 ATPs you get in an aerobic respiration by this calculation, isn't it? So ये चीज आप याद रखोगे हमेशा, it will help you out. Got it? So this is what was the aerobic respiration. I hope you understood all the things very nicely. In the next class, definitely we are going to discuss the anaerobic respiration. Got it, students? तो anaerobic respiration के बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे. So don't miss that class because there again we are going to discuss it. Many important points there. Yes. So till then, all of you, bye bye. Take care. Thank you, class. Yes, till we meet in the next class, all of you keep learning. All the best for your studies. And yes, you can also download the Arth Academy app. The link is here also, and you can download it from the Play Store. Yes, so be there because there you can get the notes and everything there with the question answers and all. Test will also be there, so you will get so many different things which will be helpful for your making your knowledge more and more perfect there. Yes, so till then all of you, bye bye and take care. Bye.